Hello, this is Dipankar Mes and you are watching NDH Prime Time. First, the headlines. 10 senior BJP leaders resign. Bounce off NGO from Maibang submits memo to Northeast Frontier Railway. Senje Society organized free medical camp, cum cloths donation. Haflong Civil Hospital in unhygienic environment. Dima Hassan welcome Dhruv Dholakia. Lakhipur walks out as a champion of the second level cluster round for the CM Cup Football 2015 and 16. Now the news in details. As the Assam Assembly election is coming closer and closer, many political parties, leaders as well as party members and workers were seen skipping their party. On 26 February, 10 senior BJP leaders of Dalong constituency of Dima Hasao district has resigned from their post and primary membership. A jointly signed resignation letter by the 10 senior leader of Saffron party was submitted in the party office, Haflong addressing the president of Dima Hasao BJP. It has also been reported that those 10 senior leaders has not yet decided to join another party. Maibang subdivision, once the capital of Dima Hasao dynasty and kingdom. Maibang is one of the largest subdivisional headquarters of Dima Hasao district with the population density more than 1 lakh. And to meet the end of vast population of the subdivision, a delegation team representing Dima Hasao Student Union DSU, Dima Hasao Women Association DWA, and Society for Truth Empowerment of People STEP had also met and produced the demand to Sri Manoj Sinha, Minister of State for Railway, back on the last week of June 2015. But till date, no action from their end has been noticed so far. Mentionable that the busy train services in the Lamding-Silchar section has already started from 21st November 2015, though the service is in initial stages. There is no any quota for reservation from Maibang railway station. Moreover, the train passes through Maibang with full of passengers without any seat left, and the passenger from Maibang has no other option but to leave stands. Hence, on 23rd of February 2016, some leading NGOs of the district like DSU and other active NGOs of Maibang, JNH, Maibang branch, HPWS, STEP, RTPC, MYSPADS, MMADWA gathered together for the placement of the long-cherished demand of the denizen of Maibang. A memorandum addressing the Honorable General Manager of Northeast Frontier Railway, Maligaon Guwahati, through the Honorable Subdivisional Officer, Sri N.K. Devnath, SCS and Railway Station Superintendent has been submitted on 23rd February 2016 respectively. The memorandum contained stoppage of every train both up and down that passes through Maibang, construction of 3 nodes of foot overbridge at the both end of railway station and the third one at the old railway crossing gate Maibang. Demand for introduction of a new local express train bound for New Haflong to Guwahati. Demand for construction of platform number 2. Demand for immediate starting of ticket reservation counter at Maibang railway station. Demand for local languages announced and requirement of local educated unemployment youth in Northeast Frontier Railway. Demand to stop demanding old meter gauge heritage bridge near the ancient historical monument named Rock Temple, popularly known as Stone House or Ek Patthar Ka Ghar. And in the conclusion of the memorandum, a time of 3 weeks have been given to the Railway Authority to take the needful action regarding the above cited demand. Otherwise, a bigger democratic movement shall be concerning the demands. Changes Society and NGO organized a free medical camp cum cloths donation in association with Assam Rifle at Lungkhuk village on 26 February. The camp was held under the leadership of Changes Society and Colonel R.K. Singh. 43 Assam Rifle was also present there as the chief guest. In the free medical camp, cloths were also distributed to the poor villagers of Lungkhuk, and apart from that, they also distributed sports material like football, etc. to the children of the villages. The organizers informed that they are planning to organize many more programs of this kinds in different parts of the district in the day to come.
To have good mentality, one should have a good health. People of every country in the world are very conscious regarding their physical health, and to have a good health, the environment should be clean. Since long time, people of this country are pointing and accusing fingers towards the government only in different fields. Especially the general public of the state blame the government for the poor condition of civil hospitals in their area. Notable that the government has provided with almost every facilities, but do we really use it in an appropriate way? To certain the fact, the team of NDA selected the field at Haflong Civil Hospital. Haflong Civil Hospital is one of the major healthcare centers of the district, Dima Hasao. Many patients from interior places of the district visited the health center, but when the team NDS entered the Haflong Civil Hospital campus, it has been learned that the environment of the hospital is unhygienic, as there is lot of wastage left over here and there carelessly, whereas government has given lots of facilities to keep the campus clean, like dustbin, etc. Moreover, the facilities provided by the government have not been used appropriately, and even people used to spit here and there without following the board which reads "do not spit," offending the sets of law. As well as we all know that people don't visit hospital willingly, they visit for their treatment. But if the environment of the hospital is dirty and unhygienic, is it possible for the doctors to cure the patient? Dima Hasao welcomed Dhruv Dhalokia, the rider on the Bullet Yatra near Boat House at around 2:45 p.m. at Haflong on 27 February. Dhruv Dhalokia, the rider from Mumbai, was received by the Highlanders Royal Enfield Biker Group from Haflong at the gate of Dima Hasao on 26 of February night when the young rider entered the district. Talking to NDH, the young biker from Mumbai said, मेरे साथ मौजूद है विभिन्न जगह से, बहुत दूर से करीबन हाफलॉन्ग आज पहुंचा है। पहले मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा वो कौन है, फिर मैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी उनसे जानिए कि वो कौन है और वो कहां से है। तो सर आपसे जानते हैं कि वरावी से आप कहां से है और किस तरह से यहाँ पहुंचा, वैसे दर्शकों को वही बताएंगे। मतलब मैं महाराष्ट्र का हूँ और मुंबई से निकला हूँ 29 सितंबर को, और मुझे अब 5 महीने होने को आ रहे हैं। इसमें मैं 12,500 किलोमीटर कवर किया है, और मेघालय आसाम मेरा 13th स्टेट है। मैं सारा भारत देखना चाहता हूँ, 29 स्टेट्स 14 महीनों में, और यहाँ के लोगों को से जुड़ना चाहता हूँ। और पहली बार आपको शायद नोटिस में आके कैसा लगा यहाँ पे और नोटिस में ना, स्पेशली इन नोटिस आसाम को छोड़ के या ऑल ओवर नोटिस में आपको विभिन्न मेघालय या लाइक मिजोरम, शिलोंग वहाँ उस होके भी आया, तो आपको कैसा फील हुआ? नॉर्थ ईस्ट में एकदम अलग सा फीलिंग है। आप सिटीज़ देखेंगे तो एकदम मॉडर्न है। हाँ, आप शिलोंग में आपको रिक्शा नहीं देखेंगे, एकदम मॉडर्न सिटी है। और आप कंट्री साइड जाएंगे तो पूरा एकदम अलग चीज़ें हैं, खाना अलग है, डांसेस अलग हैं, हर जगह पे अलग अलग है, रंगीन है, मज़ा आता है। तो आप कल उमरोसो पे भी आया, उमरोसो होके आज हाफलॉन्ग पहुंचा, और हाफलॉन्ग में इस तरह सा गैदरिंग मिला, और यहाँ की जो जनगोष्ठी है स्पेशली 13 ट्राइब है, और डिमा हासाओ में और विभिन्न ट्राइब को लेकर 13 ट्राइब होता है और विभिन्न जनगोष्ठी 19 तो होता है 19, तो उसके बीच में आप आज पहुँचा, उसका फील कैसा हो रहा है आज तक? मुझे यहाँ 10 मिनट हुए हैं, लेकिन मुझे घर जैसा लग रहा है, क्योंकि रास्ते पे आप हो तो आपको एक तो कुछ लोग मिलते नहीं है, बात नहीं होती है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था बहुत साउथ में, और उसका एकदम ऑपोजिट ये है कि यहाँ पे लोग मुझे लेने आए आसाम और मेघालय की बॉर्डर पे रात को 7 बजे 9 जन मुझे रिसीव करने आए थे। तो एक सेकंड में ये मेरे भाई हो गए ना। हाँ, वो अलग अलग जगहों से है, नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग ट्राइब्स के होंगे जो भी है, लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन वो तो मेरे भाई हो गए अभी। तो आप हाफलॉन्ग में आने के बाद आपका क्या मैसेज रहेगा जो हम जानता आप हाफलॉन्ग के लिए, जो दर्शकों को जो देख रहा है उनको के लिए क्या मैसेज रहेगा जो हाफलॉन्ग में आके इस तरह से आपको विजिट करने के बाद किस तरह से महसूस हो रहा है और कैसा आगे होना चाहिए इस तरह के टूरिज्म के बारे में? हाँ,
मैं हाफलोंग का यही मैसेज है कि मैं नॉर्थ ईस्ट से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है, आपको फीलिंग जो आता है एकदम एक्सोटिक फीलिंग आता है। और मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि आप कभी बॉम्बे आओ, कि कोई ये बाकी सारे देश को आप भी देखो। मेरा सारे देश के लिए यही मैसेज है कि आप अपने देश को देखो, जानो, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। सर, और आखिर में आपका फिर से इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ, आपका नाम फिर से काइंडली बोलने का। मेरा नाम ध्रुव धोलकिया है, मैं मुंबई से हूँ। मैंने अपनी नौकरी छोड़ के 14 महीने के लिए सोलो मोटरसाइकिल जर्नी कर रहा हूँ ऑल 29 स्टेट्स में। उसका नाम है ऑन अ बुलेट यात्रा। वो मैं रोज़ अपडेट करता हूँ और उसके सबके कमेंट्स रिस्पॉन्ड करता हूँ, 100% कमेंट्स रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शक भी मेरा ब्लॉग ज्वाइन करें, हाँ, और सारा भारत देखें। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे इंडियस की तरफ से भी उनको हार्दिक स्वागत देते हैं हाफलोंग में आने के लिए। और यहाँ पे दर्शकों को आप लोगों ने खुद देखा है, करीबन मुंबई से आके हमारे हाफलोंग टाउन पहुँचने के लिए कितना करीबन तकलीफ किया होगा। तो उसके बावजूद मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत उनकी भी मैं भी यही दुआ करता हूँ कि उनकी लंबी उम्र जाए और आगे वाले दिन की भी और कहीं पर भी जाएगा तो उनकी जहाँ भी सफल होगा। बल्कि वीडियो जर्नलिस्ट बिरासना के साथ मैं स्वादिफ असम, हाफलोंग। Dhruv will be heading towards Silchar from here. His visit to our district is a big booster to Dima Hasao tourism, as this will help further promote tourism and place the district of national and international map. Second level cluster round for the Chief Minister Cup football competition 2015 and 16 under 19 concluded on 26th of February in NL Daulagpur Sports Complex. In the three different subdivision teams competition, Lakhipur walk out as a champion team and bag a cash of rupees 27,000 along with trophy. The champion Lakhipur team will be heading for Silchar for the next level, and champion and runner-up at Silchar will participate in the first ever Chief Minister Cup football competition in 2015 and 16 under 19 at Guwahati. The two other subdivision teams participated in the second level cluster round. Here were Haflong and Maibang. In the opening match of the competition on 25th of February evening, Haflong defeat Maibang 3-0. In the second match of 26th of February morning, Maibang met with Lakhipur, where Maibang was thrust again 5-0, and in the third match Haflong played against Lakhipur, where the match ended without opening an account by both the team. At the end, Team Lakhipur was declared as the champion of the second level cluster round for the Chief Minister's Cup football competition 2015 and 16, and Team Haflong has to satisfied with their runners-up trophy. That's all we have in our NDH Prime Time. For more updates and information, log on to our website www.newsdimahasao.today, or you can follow us on Facebook. But before we leave, we will show you a Hindu devotional song sung by the Indonesian Hindu people. Keep watching NDH.